जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ, वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है. And so on gitayog.org, you will see the translation. The way I interpret it is that when devotees worship a particular deity with specific personal motive, I stabilize their faith in those forms of divinity. Nourished by those fortified belief, such devotees then become faithful ultimately to divinity itself and eventually achieve their desires. So as a memory refresher for this, for the gains will people, and perhaps the first time for others, this is the point that we discussed about this last time, was that ye Bhagwan stuck up nahi hai. This God is not the one who says ki you have to come to me and you have to take my name and you have to worship me in this form or that form. In fact, not this God, really God, because there is only one. In the final analysis, there is only one. And no problem if you want to refuse God, if you don't want to say God, if you want to say whatever or nothing, it doesn't matter. But the point is, whatever the final is, final one, the ultimate one, the Almighty, the Supreme, is very unstuck. Says it doesn't matter who you worship. Start somewhere. Have faith in something. Start believing in something. There will be a way for you to reach the truth. No matter where you start digging somewhere. You already believe in something. It is impossible for humans कि मनुष्य का किसी में और किसी बात में विश्वास नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता. ध्यान से अगर बुद्धि से अगर विचार करें, भगवान नहीं है इसमें विश्वास करते हैं तो फिर नहीं है में भी तो है ना. अगर मैं कह नहीं है, impossible to get rid of है, ये तात्विक बात है. This is a subtle thing. जैसा मैंने शुरू के ध्यान में कहा, मैं हूं. कोई ज्ञानी पुरुष विचार करके अगर हूं में लग जाए, I am, if you figure out a way to anchor around the am, leave aside the I. All trouble is in the I and all solution is in the M. A-M-M. सारी की सारी मुसीबतें मैं में है और सारे की सारे सॉल्यूशंस उत्तर हूं में है. तो मेरा सत्य है अभी इस समय मैं हूं, है ना. चित्त और जड़ की ग्रंथि बन गई, चित्त जड़ ग्रंथि जिसे कहते. मैं तो चेतन हूं लेकिन जड़ शरीर के साथ एक बन गया, गांठ बांध दी. जड़ शरीर जो नश्वर है, जो कभी हमेशा रह नहीं सकता, और मैं जो चेतन हूं जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, जो शाश्वत है, दोनों की गांठ बंध गई और मैंने अपने आप को वो गांठ समझ लिया, मान लिया. उसमें से अगर मैं अपनी अकल से ये डिसर्न कर पाऊं, right? If I use my discrimination, the Vivek Buddhi say that within this knot, the mess that I've tied together, I am the am, not the I. Right now, I think I am. मैं हूं में हूं, मैं हूं, मैं नहीं हूं. मैं हूं जो जड़ गया है. इस पर विचार करना भैया. ये बहुत, इतना सा ज्ञान बहुत दूर तक ले जाएगा, बड़ा आश्वस्त करेगा, अभी अभी भय रहित करेगा. ये सत्य है, ये अनुभव कर सकते हैं ध्यान में. ये सभी शास्त्रों का निचोड़ है कि हम है ना, टुकड़े टुकड़े नहीं है. जैसे समुद्र में हर बूंद ये कह सकती है कि हाँ, मैं समुद्र, I exist as the ocean, in the form of the ocean, I exist. But if the drop says I, the drop exist, or I, the wave exists, the wave exists is not the full truth, because the wave may exist, the wave may not exist. The same wave may not exist. But if it just focuses on exists, then it doesn't matter, small wave, big wave, little wave, drop, or the entire ocean, right? इस पर विचार करें तो ये भगवान कहते इट डजंट मैटर किसकी पूजा करते हो, इसमें मत झगड़े, ये फाइट ना करे, ये मंत्र बड़ा, वो मंत्र बड़ा, ये गुरु बड़ा, वो गुरु बड़ा, ये आश्रम, वो आश्रम, ऐसी साधना, वैसी साधना.
everybody has a different mindset. We have all have had our own journeys. We have all accumulated our own experiences. They have shaped us. We're in fact, as a necessity, by design, we are all going in different directions. It is a three-dimensional 360-degree expansion of the consciousness. The problem हो जाएगा अगर दो लोग एक जैसा सोचने लग जाएंगे, दो लोग एक जैसा करने लग जाएंगे, it will be a problem for God. And it is for the ecosystem to survive, to thrive, to blossom, to be strong and vibrant. It is best if everybody is a little bit different. If everybody thinks a little bit differently, if everybody does things a little differently. So, and there is no problem with, God doesn't have a problem with different. We should not either. And so to the point he says कि देवी की पूजा करते देवी की करो, शंकर की करनी है शंकर की करो, कृष्ण की करते करने को कोई फर्क नहीं पड़ता. कहीं न कहीं मन में विश्वास को जागृत करो कि there is something more than what I think I know. There's got to be something more to just this existence as I know it. It cannot be just that I am this limited, I have no clue where I came from. I have no idea where the dead people go and where I will go. And I don't even know why I'm doing what I'm doing. What is the purpose of my life? Why the heck am I doing all this? इससे क्या हो रहा है? Someone who starts saying, okay, let me start digging somewhere and searching will ultimately reach the truth. That is the promise of the Gita. That is the promise of the one who spoke the Gita. इसलिए वो कहते हैं कि make some progress somewhere. Any road will take you there. Because ultimately they're all, think of a circle. If we're all on the circle, in the circumference, and this is an ever-expanding, Swami Vivekananda had said something like this also, not exactly the way I'm saying, but something very similar. He had said God is a circle whose center is ever-expanding, whose center is everywhere. Swami Vivekananda explained based on the Upanishad that God is a circle whose center is everywhere. Something similar, if you think about it, if we're all on a circle, circumference, the outer perimeter, if we are looking inside, and we want to reach the center of it, we will all have slightly different radii, right, going towards the center. So start somewhere in the circle, start walking towards the center. And that walking towards is going deep within. So the point of that shloka was that we don't want to get stuck in differentiating. This is the path of unifying. सबको एकता की ओर ले जाने वाला, सबको एक दूसरे के साथ समता में लाने वाला, तोड़ने वाला मार्ग नहीं है, डिवाइसिव नहीं है, यूनिफाइंग है. ये इंक्लूसिव मार्ग है, एक्सक्लूसिव नहीं है. इसमें ऐसा नहीं कि ऐसा करोगे, इतना करोगे तो फिर अच्छे है, फिर भगवान को मिलोगे, ऐसा करोगे तो नहीं मिलोगे, फिर भगवान के नहीं. ऐसा कहीं नहीं है गीता में अथवा गीताकार के हृदय में. लेकिन विश्वास श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति. चौथे अध्याय में श्लोक भगवान कहते हैं पहली शर्त है श्रद्धा चाहिए, अनिवार्य शर्त है. Inevitably you have to have some faith in something somewhere and then start walking with it. श्रद्धावान हो तो फिर ज्ञान की प्राप्ति होगी. जो श्रद्धावान हो तब ये 100 बार कहा है, 100 गीता योग में ये बात दोहराई है. So maybe 101 is a good number. Why not one more time? So श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः. 3 बातें भगवान कहते हैं. जो अनुभव करना हो थोड़ी सी श्रद्धा लगे, इतनी पिन के सुई के नोक इतनी श्रद्धा रखे, वहां से बिल्ड हो जाएगा. क्रिस्टल ऐसी फॉर्म होते हैं ना. When the biggest crystal that formed, the biggest diamond that has formed, have formed with a tiny crystal. And the idea is, with the biggest revolutions that have been made, the biggest inventions, they have started as a tiny thought. So tiny, so subtle that we couldn't even call it tiny because they're so subtle. Thought is so subtle. You know? So the tiniest things can become the biggest. Eventually they do. So थोड़ी सी श्रद्धा रखे, थोड़ा ओपन माइंड रखे, और फिर 2 बातें करे, तत्पर हो, प्रॉम्प्ट हो, लगे रहे उसमें, थोड़ा सा स्टार्ट बिल्डिंग दैट क्रिस्टल ऑफ योर फेथ. और उसमें फिर विघ्न ना आए, इसके लिए थोड़ा इंद्रियों पर संयम रखें. वो जब क्रिस्टल फॉर्म होता हो तो उसको ज़्यादा हिलाया डुलाया नहीं, टूट ना जाए. लेट इट फॉर्म अ लिटिल बिट. इसलिए इंद्रियों पर संयम रखें. इंद्रियों पर संयम मतलब क्या? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 बातें थोड़े राशन करें.
है ना? तो थोड़ी मात्रा में जब चाहिए जितना चाहिए, जितना जरूरी उतना ही ले, जितना आवश्यक उतना ही ले, जो आवश्यक उतना ही ले, जब आवश्यक उतना ही ले। ये 3 बातें अगर करेंगे भगवान कहते हैं तो उससे उस ज्ञान की प्राप्ति होगी जिससे फिर परम शांति का अनुभव होगा।